हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कंट्रेरियन इन्वेस्टर। सो टुडे मार्केट इज क्लोज और हम सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का फीडबैक देखेंगे। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो देयर देन अगेन आई हैव बॉट सम स्टॉक्स टुडे, किस बेसिस पे मैंने बाय किया है वो देखेंगे एंड देन वी विल लुक ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। सो लेट्स फर्स्ट कम टू द निफ्टी 50। इफ यू लुक निफ्टी 50, so there has been a growth of 0.42%, while the portfolio, if I will look into it, Nifty 500 was up by 0.59%, जबकि portfolio था it was up by only equity segment अगर हम खोले it was up by 0.87%. So the today portfolio performed comparatively much better than the Nifty 500, which benchmark I follow for my portfolio. Coming to the Nifty 50 heat map, banking sector was almost flat to negative. केवल कोटक बैंक में was up by 1.52, rest flat almost 0.1 or 0.2. IT sector flat except Wipro and Tech Mahindra, we can say. Rest was almost flat to negative. HCL Tech. पेट्रोलियम रिलायंस टुडे परफॉर्म्ड वेरी वेल। मुझे लगता है इसी वजह से निफ्टी भी इट वर्कड वेरी वेल कल, ऑल्दो द रिलायंस वाज नॉट participated in the rally which took yesterday, but today it was to a great extent done by a Reliance also. FMCG green as the news of the GST जब से आया तो it is performing very well. Today the automobile performed very good. जैसे the highest greenery in the automobile were in two stocks. Highest in one was in Bajaj Auto and one was in the Tata Motors. And I'm happy that I'm holding those two stocks with Bajaj Auto and Tech Mahindra. So that was one of the positive thing when you hold the leader of that segment. The rest all was mix and green. Nestle India green, Adani Ports green by 3% and Zomato up by 2%. So let's come to the portfolio holding today. और अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपेयर टू 2 days, जिसमें म्यूचुअल फंड का भी आज अपडेट हुआ है, कल का ऑल्दो इट इज़ 0.89%, बट टुडे इन द लाइव मार्केट इफ विल कम टू द इक्विटी सेगमेंट तो इट वाज अप बाय 0.87%. सो नाउ द बेस्ट थिंग, माय पोर्टफोलियो इज ग्रीन और वो तीनों सेगमेंट पे ग्रीन हो चुका है. अगर मैं अपना इक्विटी होल्डिंग देखूं इट इज़ ग्रीन, म्यूचुअल फंड it is green, and overall also portfolio if we combine both it is green. And I have bought 3 stocks today. तो हम पहले बात करेंगे किस बेसिस बाय किया. उससे पहले डे के प्रॉफिट एंड लॉस में मोस्ट डे चेंजर में देखें, अगर हम दी हाईएस्ट डे चेंज में अगर ग्रीन में देखें, वन was the Exite Industries. Okay, it was up by 4.38%, in which I've invested around 1.25 lakh. So happy because कल ये नेगेटिव में था, today it has also converted into green. Coming to the second, Tata Motors up by 3.5%, but still a loss of 1.4%. Adani Wilmar Limited, where I am betting big in terms of target, not the amount. Amount almost same hai. It was up by 3.3%. Bajaj Auto up by 2.4%. With this, the profit is of 6.69%. I am aiming for 40 to 50% target in Bajaj Auto. 5 पैसा तो ये तो 1% of my portfolio एक जो एक्सपेरिमेंट किया है वही है. वोल्टास अगेन अप बाय 2.2%. विद दिस दी प्रॉफिट विद द वोल्टास है रीच्ड ऑलमोस्ट 10%. They were the major day gainer. Apart from this, the major loss was in the tech sectors, mainly KPIT, HCL Tech, Gold. When it will go minus 2%, then I will add more. Then Goldbees, Coal India, Bajaj Housing Finance, ICICI Prudential, and PGHH, India Hotel. Rest तो I don't think apart from this इसके अलावा कुछ था. TCS और Infosys, although in the IT sector we are green. Hindustan Zinc PSU green. One Coal India has announced a dividend of around 5 rupees 50 paise or something, so around a dividend of 1.5%. So that I will be receiving on 311 quantity. So 535 जा 1800 के आसपास कुछ मिलेगा मुझे, as I can see or think, calculate. Rest all green. Now coming to the stocks which I added today, if you will come and see the positions, तो आज मैंने 2 स्टॉक्स को बाय किया, तो ये भी 1% आज प्रॉफिट गेन हुए. सो ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग ही बाय कर लिया था, तो ऑलमोस्ट मोर देन दी पोर्टफोलियो ग्रीन. टुडे स्टॉक्स विच आई बॉट टू हैव परफॉर्म्ड. TCS I averaged 10 quantity because I am already holding TCS. As I can see, TCS तो I am holding with a amount of, I think if we'll take TCS, it is around 85 or 90,000 I am holding. So let's see, TCS I am holding of 85,000. तो मैंने आज मोटा मोटा
30,000 के और ऐड किए, सो नाउ इट विल गो अराउंड 1,15,000, दैट्स ऑल। अब मैंने यूबीएल, आईटीसी और यूबीएल किस बेसिस पे लिया? आईटीसी वन ऑफ माय फॉलोइंग टू ऑफ द स्ट्रेटेजी विच आई फॉलो वेरी वेल, कि रेंज बाउंड भी एक्टिव है एंड सेकेंडली देयर इज एक्टिव ऑफ ए मूविंग एवरेज ऑल्सो। अब आईटीसी गिरा इसलिए है कि जो 40% टैक्स का है कि 40% टैक्स विल बी imposed on sin goods which include cigarettes, alcohol and all these things. So वो थोड़ा sentiment basis down था, but as you can see the name of my channel is only contrarian investor. तो जहाँ से लोग भागते हैं मैं उन्हीं स्टॉक्स को बाई करता हूँ, because there is nothing wrong with the as per say the fundamentals the sale. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई 10 रुपये की सिगरेट है, अर्लियर इट वॉज 28% टैक्स उस पर लग रहा था, तो सिगरेट 12 रुपये 80 पैसे की हो जा रही थी। नाउ 40% टैक्स विल बी इम्पोज, तो सिगरेट 1 रुपये और महंगी हो जाएगी। सो डू यू थिंक कि जो सिगरेट पीता है वो 1 रुपये के लिए सिगरेट पीना छोड़ देगा, या ही विल डू एनीथिंग और स्विच होकर सस्ते वाले पे जाएगा? वो भी आईटीसी का ही सिगरेट है, तो वहाँ पे इट इज़ नथिंग गोइंग टू चेंज मच फॉर दी कंपनी रेवेन्यू। हाँ, सरकार का थोड़ा जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, उसके अलावा कंपनी को आई डोंट थिंक सो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। सेकेंडली ये चीज़ें मुझे लगता है दिसंबर वगैरह से ही इम्प्लीमेंट हो पाएंगी, मतलब अक्टूबर में अनाउंस करेंगे, तो मे बी 1 और 2 मंथ आफ्टर, तब तक तो मैं इसको बेच के निकल लूँगा, बिकॉज माई टारगेट इज अराउंड 12 और 13% ओनली अंडर रेंज बाउंड। सेकेंडली आप अगर आप आते हो तो आई बॉट यूबीएल। नाउ यूबीएल आई बॉट, द रीज़न इज यूबीएल विच आई बॉट because when I checked, कल मैंने ये बेचा था ना पीडीलाइट, as you would have seen my yesterday video how I booked 8% profit in 21 days, तो उसमें यूबीएल मैंने बेचा था, उसके पैसे भी कुछ फ्री हुए थे तो उनसे मैंने खरीदा है। तो यूबीएल इज प्रॉपर रेंज बाउंड, इट इज मूविंग ओके। सो आई एक्यूमुलेटेड सम स्टॉक्स एट अराउंड 1906 रुपीज लेवल एंड विद अ टारगेट ऑफ, इनिशियल टारगेट ऑफ 2150-60 का अभी का टारगेट है ओके। सो वन इज द रेंज बाउंड, सेकेंड यहाँ पे भी आप देखोगे कि मूविंग एवरेज एक्टिव है, द स्टॉक इज बिलो ऑल 3 मूविंग एवरेज। नाउ यूबीएल इज ऑल्सो वन ऑफ द, यू कैन से लिकर, it is United Breweries Limited, it is engaged in the selling of the liquors and the non-alcoholic drinks, so is engaged in the business of manufacturing sale of beer and non-alcoholic beverage। तो इसको दारू पीने और दारू पिएगा उसको कोई नहीं रोक सकता, ये एक बड़ा सा सिंपल सा फंड है जो हमें समझ जाना चाहिए। एंड इफ यू सी दी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट ना, देयर शुड बी सम रीजन कि भाई यू विल सी दी ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, देन इट इज़ 15.72% इन दी लास्ट 3 years। ये तो कुछ एक्सेप्शनल रहा होगा इस वजह से ऐसा होगा। इट इज़ अमंग दी थर्ड हाइस्ट और सेकंड हाइस्ट, ऑलमोस्ट दी लेवल ऑफ 17% यहाँ पे था एंड 20% हेयर इट वॉज। तो देयर हैज़ बीन नो सच डिक्लाइन इन ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप लाइन। कमिंग टू दी बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट इज हाइएस्ट एवर, एज आई कैन सी 184 CR, highest ever is the net profit. Profit before tax is 248, highest ever okay। Operating profit margin is almost better than the last 4-5 quarters, highest एक बार 13% या 12% था, otherwise operating profit margin also good। if you see the investors, यहाँ पे promoters बेच के नहीं गए हैं, they are intact, जबकि FIIs ने पहले सेल यहाँ पे सेल किया इस क्वार्टर में, अदरवाइज इन द लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंपेरेटिवली उन्होंने बढ़ाया ही है। गेयर्स हैज़ वेरी, पिछले क्वार्टर से उन्होंने मोर बाई किया है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। पब्लिक का है 4.92%, इन दिस 4.92% ऑल्सो 1.23% इज विथ डिराइव ट्रेडिंग एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, सो ऑलमोस्ट 3.5% ही केवल पब्लिक के पास है, विच आर इन दी वीक हैंड्स यू टर्म इट। But otherwise there is no such fundamental issue. Cash flow is positive from the operating activity. There is no such issue with the cash flow. When profit and loss, you will see year on year sales growth, it is always in progressive nature। यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ था, आई थिंक इट वॉज द कोविड के बाद का इम्पैक्ट है, अदरवाइज 75, 81, 89 then 93 trailing 12 month, so it is performing very well compared to the uh, compared to the quarterly result। if you'll come and see the PE ratio also for the valuation section, so as I can see PE ratio of the 5 year, it is below 5 year PE ratio, it is below 3 year latest हम देख लें, it is below 1 year also 6 months, so it is
well below the average PE of any time frame, 10 year के average PE पे, because ये perform करता है. Some stocks they keep on performing and they keep on trading at the PE of 100 105. So 10 साल से इसका average PE 100 रुपीज़ है, 100 है. So no such issue. And you have bought almost at the 52 week low. So जो एक cushion होता है ना downfall का, that is with you. Okay. Now coming to the United Beverage Limited. So this is the stock which I have had added. Now the total, how much quantity ITC I bought of around, I will check, around 50,000 ITC value. Then of United Beverage Limited I bought of around same of 50,000 and TCS added average of 30,000. So around 1,30,000 की buying हुई है. So with this the total portfolio will grow to, I think, 1,30,000, it will 31 lakh 25 31 lakh 35,000 के आसपास the portfolio will go up. So that will be the new portfolio holding. And with this we come to the end of the portfolio update, which I keep on updating daily. And you can subscribe to this channel if you want to and press the notification bell, so whenever I will update a new video on daily basis, you can also compare कि आपका portfolio कैसा कर रहा है, or what things I can learn you can tell in the comment section. And one of the subscriber yesterday committed to look into the Sanofi. I will just look into the Sanofi also, because it is in my holding and I have a target of the same strategy which I follow. It is this. I will convert it to a weekly time frame because it is a big target. So I'll just convert it to weekly. और weekly पे जैसे ही आया, so I have this very, my side से अगर आप देखोगे, I have kept this as my base and this as my target. Okay, around 8,000 rupees. Okay, now coming to, आप देख सकते हो कि in the last time also when the under the range bound and as I said moving average, when it comes below all three, range bound का support था या moving average के नीचे आया, again it has found back here under the range bound and it has taken a support at that level only. और weekly basis पे इसका it is forming a W as well as retrace होके again it is going up. In the holding you will see I have, I think, Sanofi. I'll just come to the equity section and Sanofi you will see there. So I think I have a holding good quantity in Sanofi. Yes, Sanofi I have a holding of around 1,10,000 where I am in a loss of currently 1.86%. So maybe I will add 20-30,000 more or till 1.5 lakh, as I will, it will fall more or from here. I will check कैसा perform करता है on the basis of that only. But for me, happiness is that whenever I beat Nifty 500 by a good margin, so it is more or less happy. अगर कल आपने वीडियो देखा होगा, my portfolio was up by 1.05% and yesterday mutual fund was up by 99%. So एक खुशी होती है कि okay चलो at least you performed better than your mutual fund also. So we will see on the monthly basis, we will also compare कि इस month में mutual fund ने कैसा किया, equity ने कैसा किया, and overall portfolio कैसा रहा in the month, which all profits I have booked. So we will see all this. To be in touch with us, you can subscribe and press the bell icon. Thank you for watching and happy creation of the more money.